Hello students, welcome to the second lecture of fast track course for your JEE and NEET preparation for subject physics. Today we are going to start with another problem from an electrostatics. The problem is that the two free charges plus Q and plus 4Q are separated by distance d apart. A third charge Q, capital Q, is placed at distance x from this charge plus Q. You have to find the magnitude of Q and the distance x so that the system is in equilibrium. The three charge system is in equilibrium. The four options are given below. Now we'll see how to solve the problem. Okay. For the system to be in equilibrium, the force acting on each of these three charges, force acting on plus Q, plus 4Q and capital Q must be equal to what? 0. Okay. Now what is the polarity of this charge plus Q? That we'll discuss in the second part of the solution. The first part I will find out what is the value of x. Now note this plus Q and this Q will have a electrostatic force. It may be of attraction or repulsion. मान लो अगर ये माइनस है तो प्लस क्यू माइनस क्यू ये क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, ये माइनस है ये प्लस है तो ये फोर्स क्या हो गया? अट्रैक्टिव. These two attractive forces which are in opposite direction must what? Neutralize each other, and if they neutralize then the net force acting on plus q will be equal to what? 0. Okay, what is the Coulomb's force between these two? It is 1 upon 4 pi epsilon 0 q capital Q upon x square. Okay, it is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. What is the Coulomb's force between this plus q and this plus 4q? Not plus q. We don't know what is the polarity. It is q into what? 4q upon what? D minus x whole square. Okay. 1 upon 4 pi epsilon 0, 1 upon 4 pi epsilon q goes off the board. 1 upon x square is equal to 4 times 4 upon d minus x whole square. Therefore 1 upon x is equal to 2 times d minus x. Therefore d minus x is equal to 2x. Therefore 3x is equal to d, and therefore x is equal to what? D by 3. Okay, very good. So we have distance mila, x is equal to what? D by 3. Now as we have calculated x is equal to d by 3 and the force acting on this plus q is equal to what? 0. Now for this whole system to be equilibrium, the force acting on this plus q must be equal to what? 0. Now force on this plus q is because of this capital Q and this 4q. In दोनों कूलम फोर्स का एडिशन कितना होना चाहिए? 0. इन दोनों में फोर्स कितना है? लेट अस सी. द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस क्यू क्या है? फोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस. और इन दोनों में कितना है? इन दोनों में कितना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू 4q अपॉन व्हाट? टी स्क्वायर. ओके, और इसका एडिशन कितना होना चाहिए? 0. सी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक छोटा q कैंसिल हो जाएंगे. दैट विल बी इक्वेटेड विद 0. आई विल हैव q अपॉन कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर प्लस एक q चला गया ना, 4q अपॉन व्हाट? d स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 0. ओके, नाउ व्हाट इज d इक्वल टू? 3x. ओके, तो यहां पर मैं अगर d इक्वल टू 3x डालता हूं तो ये क्या होगा? 9x स्क्वायर. बिल्कुल. तो if I take 1 upon x square common and equate it with 0, that will be also what? 0. I will have terms 4q plus 4q upon 9 is equal to what? 0. So what is capital Q is equal to minus 4q upon 9. And this is your answer. So if
the magnitude of the middle charge is minus 4q upon 9. The force acting on this plus q will be also what? Equal to 0. And just check whether that is in your option or not. Now once we get the answer for the magnitude of this capital Q, we have obtained the value for the magnitude of capital Q by seeing whether the force acting on this plus Q is equal to 0 or not. Now what is the magnitude of capital Q? Minus 4q by 9. ये distance कितना है? D by 3. ये distance कितना होगा? 2d by 3. Now as a part of the homework, you just check out whether the force acting on this plus 4q is also 0 or not. Now why I am not checking out whether the force acting on this plus 4q is 0 or not? Because now we are solving this problem in our competitive examinations. They had given us the 4 options and these 2 answers I am getting in my option C, and so I need not actually check whether the plus 4q पर force act 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर x is equal to d by 3 and q is equal to minus 4q by 9, then force acting on this plus q and this capital Q is definitely equal to what? 0. But you can give a try as in your notebook and check out whether the force acting on plus 4q is also 0 or not. If you want to just do it in a very quick manner over here, इसकी जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में सॉल्व करने की, लेकिन फिर भी हम देखते हैं. चलो अब इन दोनों में फोर्स कितना है? इन दोनों में कितना है? 1/4 pi epsilon 0. Just we can make a space. खिचड़ी न पोहागा. Okay. What is force acting between these two? 1/4 pi epsilon 0 q 4q upon what? D square plus what is force acting between these two? 1/4 pi epsilon 0 yes q into what? 4q आणि हे डिस्टन्स किती आहे? हे डिस्टन्स आहे ये है d by 3 ना, ये है d, तो ये कितना हो गया? 2d by 3. तो ये आएगा 2d by 3 का स्क्वायर, और ये क्या होना चाहिए? 0. 1/4 pi epsilon 0 1/4 pi epsilon 0 q 4 गया, तो यहाँ पर क्या बचा? q by d स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचा? कैपिटल Q अपॉन 2d by 3 का स्क्वायर कितना है? 4d by 9 equal to what? 0. 4d square by 9. Okay. Now take the 9 jumps up. Q by d square plus 9q by 4d square equal to 0. ये d square उधर जाएंगे, वो that will be also equated with what? 0, and you will be left with what? 9q upon 4 is equal to what? Minus q. That means what is capital Q is equal to minus 4q upon 9. वही आंसर आया, आना ही चाहिए था. लेकिन क्या ये सॉल्व करने की जरूरत थी? एंट्रेंस एग्जाम में तो नहीं थी जरूरत, लेकिन हमने जस्ट एक क्रॉस चेक किया whether our answer is correct or not. Okay, please even take a note of this one. Let's discuss a second problem for the day. They are given that there are 3 charges, each of magnitude plus q. They are placed at the vertices of an equilateral triangle. A third charge capital Q is placed at the centroid of this equilateral triangle, and if this capital Q is equal to minus q, then what will happen? The options given in the questions are that the charges will move towards the center, charges will move away from the center, charges will remain stationary, or charges will move in any direction. तर असा हा क्वेश्चन आहे. लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्ट. नाउ दे हैव गिवन दैट दिस चार्ज इज नेगेटिव. ओके, तो ध्यान से देखो. अब ये हम एक काम करेंगे, वी जस्ट फर्स्ट डिस्कस अबाउट द what will happen on this particular charge, and by symmetry then we can come to the conclusion. This plus q and this plus q, there will be a force of repulsion. This plus q and this plus q, there will be a force of repulsion.
this plus q and this minus q, there will be a force of what? Attraction. Okay. Now this two force of repulsion, the resultant of this force of repulsion will be in this direction, and the attractive force is towards the center, the repulsive force is away from the center. If the magnitude of the repulsive force or the force acting in this direction, if it is greater than the force that is acting towards the center, then the charge plus q will move away. That means I can come to the conclusion that this plus q will also move away, this plus q will also move away. लेकिन अगर this force is dominant, then this plus q will move over here, this plus q will move over here, this plus q will move over here. So we have to find out which force is greater in magnitude. Okay. अब I'll redraw the diagram. थोड़ा सा diagram मोटा कर दूँ. Okay. Look at this. Plus q, plus q, plus q. Plus q force of repulsion I am doing in this way, F1. What is the magnitude of F1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q square upon a square, where a is what? The side of an equilateral triangle. This plus q, there will be a force of repulsion, and the magnitude of F1 and magnitude of F2 will be what? Same. Magnitude तो सेम ही रहेगा. क्या रहेगा? 1 upon 4 by epsilon 0 q square upon a square. Now what is the angle between this? It is 60 degree. How do you find the resultant force? हमने वेक्टर्स में सीखा था. What is R is equal to under root p square plus q square plus 2pq cos theta. बराबर? If two vectors of magnitude p and q are inclined at an angle theta, then the magnitude of resultant is given by R is equal to under root p square plus q square plus 2pq cos theta. Okay. यहाँ पर p और यहाँ पर q दोनों की मैग्नीट्यूड्स क्या है? सेम है, और मैं इसे f मानता हूँ. तो ये r क्या हो गया दोनों मुझे? f स्क्वायर प्लस 2ff cos of 60. What is cos of 60? Half. तो हाफ और 2 कैंसिल हो गए. f square plus f square is what? 3f square. So what is R is equal to root 3f. So this resultant force is of magnitude what? Root 3f. That means this resultant force is equal to root 3 1 upon 4 pi epsilon naught q square upon a square. Okay. Now the charge minus q, which is placed at the center, will exert which force? An attractive force. Okay. This will exert what? An attractive force. I am denoting it by F A कहता हूँ मैं. F A stands for what? The attractive force between this plus q and minus q, and that is towards what? The center. By symmetry, it is very clear that this resultant force between F1 F2 is what? Away from the center. This attractive force is what? Towards the center. अब मुझे FA की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है. अब यहां पर जो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली यू मस्ट नो दिस. Distance of a vertex of an equilateral triangle from its centroid is. मुझे ये डिस्टेंस चाहिए. ये डिस्टेंस, चलो ये कितना होगा? a/2. ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री. बराबर है. व्हाट इज cos 30 इज इक्वल टू? cos 30 इज इक्वल टू a/2 डिवाइड बाय r. सो what is cos 30? root 3/2 a/2r. what is r is equal to a/root 3. ये आपको मालूम चाहिए. मैंने यहाँ से यहाँ पर डिराइव तो करके दिया आपको, लेकिन ये
जब आप जेई मेंस और नीट की तैयारियां करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये मालूम चाहिए। डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द इक्विलैटरल ट्रायंगल फ्रॉम इट्स सेंट्रोइड इज व्हाट a by 3। ये डिस्टेंस कितना है a by √3। ओके, चलो अब इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यस क्यू स्क्वायर। मैग्नीट्यूड देखो सिर्फ प्लस क्यू यहाँ पर माइनस क्यू। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट द मैग्नीट्यूड, डोंट राइट माइनस ओवर हियर। मैंने पहले यहाँ पर एफ ए दिखाया है, वो अट्रैक्टिव फोर्स है। और आर कितना है a by √3 का स्क्वायर। ओके, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 ऊपर चला जाएगा और ये बना q स्क्वायर अपॉन व्हाट 4 पाई एप्सिलॉन 0 a स्क्वायर। लेकिन q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 a स्क्वायर, व्हाट इज दिस fa इज इक्वल टू 3 टाइम्स q स्क्वायर। देखो यहां पर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस 3 को लिख रहा हूं √3 इंटू √3 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। नाउ टेल मी व्हाट इज √3 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर r। सो व्हाट इज अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू √3 टाइम्स व्हाट this resultant force r. What is r? It is the resultant of F1 and F2. What is Fa? It is attractive force between plus q and minus q. Whose magnitude is greater? Fa. Fa is greater than what? This r. Attractive force is greater than what? This repulsive force. It means what? This charge plus q will move towards what? Center. In same manner we can prove this charge q moves towards the center. This charge q moves towards the center. और इसलिए आपका आंसर क्या चाहिए? The answer must be that these charges will move towards what? The center. Now we'll think little extra on this particular problem. शायद ये they can set the question in this way. The charge plus q plus q plus q are placed at the vertices of an equilateral triangle. And charge plus q, the charge plus q, charge capital Q is placed at the center. What must be the magnitude of capital Q so that the charges remain stationary? When will charges remain stationary? When your R will be equal to what? Fa. आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? कि क्वेश्चन क्या है कि what must be magnitude of capital Q? ये अपना capital Q था ना. What must be the magnitude of capital Q so that charges remains stationary? Now you can give a try to this problem. आप सोचो कि what must be आपका अप्रोच कैसा चाहिए जब ये आप ये सेकंड पार्ट प्रॉब्लम का सॉल्व करते हो कि लेट यहां पर कैपिटल क्यू है तो आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा बोलने √3। दिस आर इज व्हाट? ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये तो आर वही रहेगा बिकॉज आर स्टैंड्स फॉर व्हाट? द रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन ऑफ व्हाट? F1 and F2. F1 की magnitude is depending upon this plus q and this plus q, that is not going to change. F2 की value is depending upon plus q and plus q, that is not going to change. R is the resultant of what? F1 and F2, so that is not going to change. ये मुझे चेंज करना है। मेरा ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स को क्या होना चाहिए? It must be balancing them. Okay, so I'll make some changes over there. See, if you have not copied down, you please pause the video and first copy down this. So the second part I need to rub that part. Okay. अब यहां पर देखो, ये q स्क्वायर नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा? q. Note one thing, this charge must be what? Negative only. मैं सिर्फ कैपिटल Q की मैग्नीट्यूड निकालूंगा और ऑप्शंस में मैं नेगेटिव आंसर टिक करने वाला हूं, तो यहां पर क्या आएगा? क्यू बराबर है? ओके,
For charges to remain stationary, the attractive force must be equal to resultant repulsive force 3 times 1 upon 4 pi epsilon naught q upon a square must be equal to root 3 times, yes, 1 upon 4 pi epsilon 0, yes, q square upon a square. तो एक क्यू जाएगा a square 1 upon 4 pi epsilon 0 a square. Okay, so what is 3q is equal to root 3 small q. So what is q is equal to root 3 upon 3. That means what? 1 upon root 3 q. Okay, so what must be the magnitude of the charge? That what must be this value of q equal to? Value of this q must be equal to what? This must be equal to minus 1 upon root 3 q. इस आंसर में माइनस क्यों नहीं आया था? सिर्फ हमने वो मैग्नीट्यूड्स इक्वेट किए थे. माइनस साइन तो चाहिए क्योंकि दिस इज प्लस, दिस हैज टू बी नेगेटिव, then only there will be what? Force of attractive. So your answer must be equal to what? Minus 1 upon root 3 q. So the second part of the problem was what must be the magnitude of capital Q so that the charges remain stationary, and the answer is in front of you. Please take a note of the solution. In today's lecture, we started with what? When the three charges were in along a straight line. My second problem was what? When the charges were arranged at the vertices of an equilateral triangle. तो अभी लाइन हो गई, ट्रायंगल हो गया, तो ये लाजमी है कि मेरा थर्ड प्रॉब्लम क्या होगा? एक्स स्क्वायर के बेस पर होगा. Now there are charges, 4 identical charges plus q. They are placed at the vertices of a square. What must be the magnitude of this capital Q? The fourth charge capital Q is placed at the center of this square. What must be the magnitude of capital Q so that the system remains in equilibrium? Okay, let's solve the problem. See how to solve this particular problem. See, whatever may be the magnitude of this charge plus Q, not plus Q, capital Q, the force acting on this will be always 0 by symmetry, because it is surrounded by 4 equal charges which are placed at what? Equal distances from that charge capital Q. So for a system to remain in equilibrium, the force acting even on this particular charge must be also equal to what? 0. इस पर तो फोर्स 0 एक्ट होने ही वाला है. Why? Because it is placed at the center, surrounded by what? 4 charges of equal magnitude, and they are also equidistant from it, and symmetric distribution है. ऐसा भी नहीं. The force between these two will be nullified by force between these two. Force between these two will be nullified by the force between these two. So the force acting on this capital Q will be always 0. But for a system to remain in equilibrium, the force acting on each of them must be 0. So I'll start and first find out that what must be the magnitude of this Q so that the force acting on this plus Q is also equal to what? 0. Okay. इस plus Q पर 3 forces act हो रहे हैं. Repulsive. One, this, ये हो गया F1, this one, ये हो गया F2. मान लो ये डिस्टेंस A है. What is the magnitude of F1 and F2? Magnitude I am saying it is equal to what? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q square upon what? A square. बराबर है? Okay. Now this plus Q and this plus Q, there will be what? A repulsive force in this way. मैं इसे F3 कहता हूं. तो what is F3 is equal to? It is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q square upon D square. What is D? D is the length of the diagonal.
and as you know what is the length of a diagonal of a square is equal to, it is equal to root 2 times what side. तो ये क्या हो गया बोलो मुझे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर अपॉन व्हाट 2a स्क्वायर. ओके, अब ध्यान से देखो. अब ये जो तीन फोर्सेस है F1, F2 और F3, F1 और F2 मैं यहां पर अलग से दिखाता हूं आपको. ये रहा F1, ये रहा F2. ये दोनों की मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, दोनों 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है. सो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, it is equal to root 2 times F1. Are you getting this? Why this magnitude of this resultant force is root 2 times F1? F1 और F2 के magnitude क्या है? Same है. They are inclined at an angle what? 90 degree. The resultant will be in this manner. So what is the resultant is equal to root 3 F1. Okay. अब ये जो F3 है, उसकी डायरेक्शन और F1 और F2 की डायरेक्शन भी क्या है? सेम है. तो उसमें ही F3 ऐड हो रहा है. सो नेट रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? F1 और F2 का रिजल्टेंट कितना है? रूट 2 F1 प्लस F3 को मैंने डायरेक्ट क्यों ऐड किया बोलो मुझे? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ F3 इज अलॉन्ग व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? F1 and F2. So this is root 2. What is F1 is equal to 1/4 pi epsilon 0. Yes, it is equal to q square upon a square plus, and what is this? F3 is equal to 1/4 pi epsilon 0 q square upon 2a square. मैं हाफ बाजू में लिखता हूँ. ये आएगा 1/4 pi epsilon 0 q square upon a square. तो ये क्या बना? root 2 plus half in bracket 1/4 pi epsilon 0 q square upon a square. Okay. Now इसको ये रिजल्टेंट जो रिपल्सिव फोर्स है इस पर इस बाजू में एक्ट हो रहा है, उसको नलिफाई करने वाला ये फोर्स चाहिए. The attractive force between this plus q and this capital Q. So this capital Q must have what? Negative polarity. अगर ये भी पॉजिटिव रहा तो that will also act along the direction of F3 and this plus Q will move away. In order that the net force acting on this Q is 0, this capital Q has to be what? Negative. That thing you keep in your mind. I'm just going to first find out the magnitude and then eventually give what? The polarity. Okay. इन दोनों में क्या फोर्स है? मैं इसे Fa कहता हूं. ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या रहेगा? 1/4 pi epsilon 0 q upon r square. R is what? The distance of the vertex from the center of the square, and this is equal to what? A by root 2. ये आपको आना चाहिए. जैसे लास्ट प्रॉब्लम में मैंने आपको कहा था the distance of the vertex from the center of an equilateral triangle क्या चाहिए आपका? A by root 3. ये आपको मालूम होना चाहिए. उसी तरह the distance of the vertex of a square from its center is what? A by root 2. तो ये आएगा Fa is equal to, क्या मैं इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूं तो ये आएगा A by root 2 का स्क्वायर कितना आएगा? A square by 2. 2 will jump up. तो ये कितना आया? 1/4 pi epsilon 0 q upon what? A square. और आपका रिपल्सिव फोर्स और ये अट्रैक्टिव फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए? सेम. तो ये कितना आएगा? रूट 2 प्लस हाफ. ओके, इंटू व्हाट? 1/4 pi epsilon 0 q square upon a square must be equal to what? 2 times what? 1/4 pi epsilon 0 capital Q upon what? A square. 1/4 pi epsilon 0 a square, एक q चला जाएगा. तो यहां पर क्या बचा? रूट 2 प्लस हाफ q इज इक्वल टू 2q. तो q क्या हो जाएगा? अब यहां पर देखो, ये 2 नीचे आएगा. ओके, सो व्हाट इज रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/√2.
and what is half divided by 2? 1/4 into what? Q. Okay. और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि the polarity must be what? Opposite. 2 मिनट, अभी यहां पर मैं लिखता हूं इसका आंसर. So capital Q must be equal to minus Q. माइनस Q दिया है, मैंने उसका एक्सटेंशन आपको इनिशियल में ही दिया था. इधर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड डिटरमाइन किया है. मैंने पहले भी कहा था कि इसकी पोलैरिटी क्या चाहिए? निगेटिव. माइनस Q ऑफ 1/√2 प्लस 1/4. ये आपका रहा आंसर. इसको आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. ये 4 + √2/4√2 आएगा. या आप इसको ऐसा ही रखना चाहते हो तो ऐसा ही रखो. और लेकिन आप जो ऑप्शंस दिए हैं उस ऑप्शंस के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर. नाउ लेट अस चेक आउट व्हाट आर द ऑप्शंस दैट हैव बीन गिवन टू अस. द ऑप्शंस आर इन Q/4 फॉर्मेट. तो चलो मैं ये लिखता हूं -Q/4. ओके. तो ये क्या लिखूंगा मैं? 4/√2 + 1. आई बात समझ में? मैंने 1/4 क्या लिया? कॉमन. अब यहां पर देखो 4 को लिखता हूं मैं 2 × 2. व्हाट इज 2/√2? √2. तो ये क्या आएगा? 2√2 + 1. तो मेरा ये फाइनल आंसर कितना है? कैपिटल Q इज इक्वल टू -Q/4 इन ब्रैकेट 2√2 + 1. Got it? Yes, please take a note of this problem and write down in your notebook.